महायान जो हम लोग अभ्यास करते हैं, उसका सोर्स कहाँ से आया है ना, मटेरियल कहाँ से आया। तो सूत्र ऑफ इनफाइनाइट मीनिंग जो अभी परिमार्थ सूत्र जो आप लोगों ने चैंटिंग किया वहां से, और एक हिस्सा है लोटस सूत्र का। जो लोटस सूत्र है वो उसी के अंतर्गत अपरिमितार्थ सूत्र है। Now, the Sutra of Infinite Meaning is the prelude to the Lotus Sutra. I've explained 2 months ago that when the Buddha went through the periods of teaching, the 4 periods of teaching, the Avatamsaka Sutra, the Agama Sutra, the Vaipuya period, the Prajna period. So at the end of the Prajna period of teaching, before he went to the Lotus Sutra, the Buddha manifested this Sutra of Infinite Meaning. तो ब्रदर जी बता रहे हैं कि जो लोटस सूत्र के पहले है, उसके पहले इनफाइनाइट सूत्र वगैरह का भगवान बुद्ध ने वर्णन किया था। तो जो इसमें और भी सूत्र आते हैं, जैसे वेपन सूत्र वगैरह है, लेकिन इनफाइनाइट सूत्र का वर्णन पहले मिलता है, ऐसा है। Now, in Suchi, Master Chen Yan has given us the teaching on the Lotus Sutra. The Lotus Sutra are 28 chapters, but Master Chen Yan has covered 23 chapters. जैसा कि देख रहे हैं, लोटस जो सूत्र है उसमें मुख्यतः 28 अध्याय है, और मास्टर चेंगन के द्वारा जो किया गया है कवर, उसमें करीब 23 अध्याय हैं। और so this teaching is the perfect teaching by the Buddha to attain Buddhahood. जो शिक्षा है वो बुद्धाहुड की तरफ, है ना, अग्रसर करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। So last month, Brother P.S. Gave an introduction on the essence of infinite meanings. This is the book written by Master Chen Yan, and the Sutra of Infinite Meaning. There are 3 chapters. First chapter is on virtues. Second chapter is on expounding the Dharma, and the third chapter is on the merits. ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं सामने, मास्टर चेन यान के द्वारा लिखी गई है, इसमें इनफाइनाइट जो सूत्र है उसी के ऊपर आधारित है। पहला जो चैप्टर है वर्च्यू, उसी के ऊपर में है, हमारा जो एथिक्स है उसके ऊपर है। दूसरा है एक्सपांडिंग धर्म, धर्म का जो व्याख्या है उसके ऊपर में है। तीसरा मेरिट्स, जो हमारे गुण है ना, पारमिता गुण है, उसके ऊपर। So, as a quick summary, last month, Father Pierre shared the first chapter is on merits. It's about the virtues. Sorry, the first chapter is on virtues, all the Buddhas and Bodhisattva, and this is to set, this is our aspiration of where we want to be. So, जैसा कि पिछले महीने में इन्होंने बताया था, जो रास्ता है बुद्धा प्राप्त करने के लिए, इनफाइनाइट सूत्र में जो पहला चैप्टर है वर्च्यू, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। The second chapter is on expounding the Dharma, which show us the roadmap. दूसरा जो अध्याय है वो धर्म की व्याख्या के बारे में है, वो बताता है कि रास्ता कैसे कैसे है, उसके बारे में। The third chapter is about the 10 merits, which explains the journey, because these merits are necessary for us to be on the journey life after life. तीसरा जो अध्याय है वो मेरिट्स के बारे में है, गुण, पारमिता, पुण्य के बारे में, जो कि 10 है, ये हमारी यात्रा के बारे में है। Okay, so chapter 1. Chapter 1 on virtues. A very quick summary on this virtues. The virtues is we all come from the cultivation. There's the outer practice, there's an inner cultivation on this great body path. Obviously, the outer practice is about us and how we interact outside. The inner cultivation is our inner development to walk on this great body path towards Buddhahood. तो वर्च्यू को प्राप्त करने के लिए जिसमें बताया गया तरीका ग्रेट बोधि पाथ, मीन्स जो बोधि है हमारे अंदर, ज्ञान है, वो कैसे बढ़ेगा,
तो एक दो तरीका है, आउटर प्रैक्टिस, इनर प्रैक्टिस। आउटर प्रैक्टिस में हम व्यवहारिक तरीके से चीजों को करते हैं, इनर प्रैक्टिस में अपने अंदर के बदलाव को उसको परिवर्तन करने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। Now, I'm going to take from now and all the other lessons coming forward that we are sharing with you about this chapter 1 on virtues. How do we develop virtues the Suchi way? पहले अध्याय में जो वर्च्यू सी है उसको हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं सूची के तरीके के अनुसार, सूची में जो अभ्यास में लाया जाता है वर्च्यू उसके अनुसार। So that brings me to the second point, the Suchi way. So this is Master Chenya's aspiration. Her aspiration comes from the vow given by her master. And this vow is in 6 words: for Buddha Dharma, for sentient beings. She has one vision: to purify the hearts. So she guides us what we need to do to purify our hearts, how to promote harmony to the society, and get help and get rid of the world disasters, taking care of the environment. मास्टर चेंगिंग का जो दृढ़ संकल्प है उसमें 6 भाव है, उसमें से एक जो है भाव मीन्स प्रतिज्ञा, उसमें से एक जो है भगवान बुद्ध का जो धर्म है उसके लिए, जो संत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके लिए जो विजन है उसमें है कि हम दिल को साफ रखें, शुद्ध रखें और समाज में सामंजस्य और शांतिपूर्ण वातावरण लाएं, और विश्व में जो बहुत तरह की आपदाएं आते रहती है उससे बाहर निकलें। तो सूची का जो है कॉम्पैशन और रिलीफ, करुणा और दया के माध्यम से, मदद के माध्यम से इसको कार्यान्वित करना है। Yes. The word Suchi means compassion, relief. Now, in the chapter 1 about the virtues in the Sutra of Infinite Meanings, now the Buddha has been teaching on every of the teaching, all the way from the first period of teaching right until the 4th period on Patana period. It's all about virtue. But what's so different about the virtues in the Sutra of Infinite Meaning is this. So the virtues we need to develop is not for our own sake, it's for the sake of others. So that's the reason why the philosophy of Zerchi is about compassion. The compassion for the benefit of others and to alleviate the suffering of others. पहले अध्याय में जो वर्णन है और खासकर सूची का जो तरीका, उसमें जो करना है पहले अपने लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए, दूसरे जो बीमार है, दुखी है ना, उनके लिए जो करना है, उनके लिए जो कार्य है, उस पर ये मुख्य रूप से केंद्रित है। Yes. So I will just very quickly here spend a couple of minutes to explain the journey of how Master guided us and from the very beginning. So all these virtues that we want to encapsulate is we have built it into what we call humanistic virtue, which we actually in Suchi we try to promote that even in the school. Humanistic virtue means मानव कल्याण के लिए जो गुण है, सद्गुण है, उसके डेवलपमेंट के लिए सूची में कैसे कैसे कार्य किया जाता है, तो वो चीज यहाँ पे दिखाया है। So we began in 1966 in Hualien in Taiwan, very humble beginnings. When Master Chen had the aspiration, started with only 30 housewives. But where we to get the money, we were all in a very small wooden hut. We were all very poor. So Master has this aspiration. It started with Taiwanese 50 cents a day saving by each of the housewives. Now, 50 cents a day was only equivalent to only 2 US cents, and that's all we began. But that 50 cents, she believed that can help to save lives. तो आप तस्वीर को देखिए,
हुआली ने एक जगह है ताइवान में, वहाँ पे मास्टर चेंगे ने 1966 में 1966 में शुरू किया था। और इसमें करीब 30 जो हाउसवाइफ्स थी, घरेलू महिलाएं, उनके साथ में मिलकर काम शुरू किया था। जो बम्बू बैंक का इनिशिएटिव है कि 50 सेंट जो है जीवन बचा सकता है छोटी छोटी सी मदद करके, उन्होंने ये कार्य शुरू किया था 1986 में। So with just only 50 Taiwanese cents or 2 US cents a day by 30 housewives, uh, this virtue of having the heart to help others grew from 30 housewives to somewhere today that we started to promote. Right? We said, why don't we, if all the housewives can just save 2 US cents a day or 50 Taiwanese cents a day from their daily grocery, they can build a lot of money to help others. तो जो 30 महिलाएं थी, उन्होंने छोटी छोटी सी रकम जमा की, जैसे मार्केट में कुछ खरीदने के, बाजार में सब्जी पर, तो वहां से थोड़े से पैसे बचा बचा कर जमा किया, और वो पैसे बहुत मददगार साबित हुआ लोगों को मदद करने के लिए। Now, the amount may be small, you see, but we all gather together, we have great strength. So, great strength starts from small giving. तो जो हम बहुत बड़ी चीजें देखते हैं, जिसका आपको लगता है कि जैसे सूची बहुत बड़ा, तो इसकी जो शुरुआत हुई छोटी छोटी चीजों से हुई। वो जो छोटी चीजें हम प्रतिदिन करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट होता है। So, from the bamboo bank, so they save money into a bamboo bank, you can see in this picture. And they started, but today, you know what, from the 30 housewives, we have now 10 million members around the world. We are all in all various countries. We have built schools in various countries. We have done work to relieve from natural disasters from people who have lost their homes. We have done a lot of medical outreaches for, for those people who couldn't afford any medical treatment or there is no medical treatment available. We distributed more than 1 million blankets in 44 countries, and so on and so forth. And just it all began with only 30 housewives saving 50 Taiwanese cents a day. तो आसूची जो फाउंडेशन है, विश्व पटल पे बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी जो शुरुआत है बहुत छोटे से 30 महिलाओं से हुई। आज इसके जो मेंबर है करीब 1 करोड़ 10 मिलियन है ना। और सूची आज 136 देशों में कार्य कर रही है सफलतापूर्वक, जिसमें बहुत सारे चैरिटी वर्क है, स्कूल है, लोगों को घर बना कर देना है, कंबल बांटने हैं, तो मेडिकल सुविधाएं जो है, दवा वगैरह, जहाँ जो जो आवश्यकताएं पहुंच रही है ना। तो ये सब उन लोगों के प्रयासों से संभव हो पाया है जो अपना प्रतिदिन छोटा छोटा योगदान 50 सेंट्स की तरह कर रहे हैं और वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे हैं। So, in this virtue, we all do things for the benefit of others. So, with all the work that we do, even as a volunteer, we do it at our own expense for the benefit of others. And that was one of the things we are doing in Bulgaria. So you can imagine that even in the Sutra of Infinite Meanings, it says that one gives rise to infinity, and in infinity arises from one. So from 30 households, we have 10 million members, and it's still growing. जैसा कि इंफिनिटी सूत्र में शील के बारे में, सद्गुण के बारे में बताया गया है, तो ये दूसरों की मदद के लिए, दूसरों के वेलफेयर के लिए, उनका लोक कल्याण के लिए कार्य करना है। जैसे ये सूची फाउंडेशन में जितने लोग मेंबर जुड़ते हैं, बोध गया में भी यहाँ सेंटर हुआ, तो ये सभी काम दूसरों के मदद के लिए किया जा रहा है। So that's my second point. And I go to my third point about the mission, Suchi's mission. How do we organize in Suchi to promote these virtues that for all of us in Suchi members to be able to cultivate and in practice? So there are 4 missions of compassion,
and they cover 8 footprints. सूची मिशन में जो है करुणा के 4 प्रमुख मिशन है, उद्देश्य है, और उसके अंदर 8 अलग-अलग हिस्से हैं. So, what are these 4 missions? The 4 missions are charity, medicine, education, and humanistic culture. ये जो 4 प्रमुख उद्देश्य हैं सूची के, उसमें पहला है चैरिटी, दान, कल्याण, सेवा. दूसरा है मेडिसिन, हेल्थ केयर, चिकित्सा. एजुकेशन, शिक्षा. और ह्यूमनिस्टिक कल्चर, संपूर्ण मेंटल डेवलपमेंट, जो मानव लोक कल्याण के लिए है. So in charity, we do what we can in helping the poor, just like as we are doing in Bulgaria right now. In medicine, we try to reach out for those people who are lacking in medical care. These are done by our volunteers, doctors and nurses. And even in Sochi, in Bulgaria now, we have nurses who are based there. तो बोधगया में अभी देखेंगे मुख्य रूप से चैरिटी का काम शुरू हुआ है, और साथ में ही जो मेडिसिन है, चिकित्सा से संबंधित, जहाँ जहाँ जिनको आवश्यकता है, जरूरत होती है, तो सोची के जो वॉलंटियर्स हैं वो जाकर उनको मदद करते हैं. डॉक्टर, नर्स सब सहयोग मतलब आपस में सामंजस्य स्थापित करके वो काम करने के लिए वहाँ पे जाते हैं. In education, we do so with to help bonding of the families. We also try to promote values at a very early age. In humanistic culture, we try to promote virtues about humanity so that we can understand each other to have a harmonious society. तो एजुकेशन का जो भाग है शिक्षा का, तो उसमें बच्चों में जो क्वालिटी है, बच्चों वो डेवलप हो, और जो शिक्षा है वो अच्छे से उनको मिले. ह्यूमनिस्टिक कल्चर जो है मानव कल्याण, उसमें मुख्य रूप से बच्चों पे फोकस किया गया है, साथ में ही उनका जो संपूर्ण मेंटल डेवलपमेंट है ना, मानसिक उत्थान, उसके ऊपर भी केंद्रित है. So if I add 4 more, we get the 8 footprints. First of all, we have the disaster relief, which we go to every place around the world where we want to. When we don't have a Suchi center there, we will find Suchi members into the nearest country. We will fly in there to help those people suffering from earthquakes, any form of disasters, whether floods, and so on and so forth. तो जो आपदा से मदद पहुंचाने, जैसे आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं अलग अलग तरह की, तो सूची के वॉलंटियर हमेशा तत्पर रहते हैं, अलग जो नजदीकी देश है वहां आते हैं, वहां जाते हैं और उसको मदद पहुंचाते हैं. So we also have a bone marrow bank. In fact, Sochi as one of the world's largest bone marrow bank. So the donors of bone marrow, which are kept in Sochi, because of the bone marrows have to be matched to have the right matching to a recipient. जो बोन मैरो बैंक, बोन मैरो समझते हैं ना, हमारे बोन के अंदर का जो होता है, जो खून बनाने में मदद करता है, तो उसका भी बैंक दुनिया में सबसे बड़ा बैंक है, वो सूची का है, बोन बैंक का, जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में लोग होते हैं उनको मिलता है ये, और उनकी जान बचाई जाती है. Yes. So bone marrow is necessary, especially for those who are suffering very severe form of illnesses like leukemia, which is a blood cancer. जो ब्लड कैंसर किसी को हो जाता है ना, तो उनका खून नहीं बन पाता, तो बोन मैरो बदलना पड़ता है. हड्डी के अंदर का जो है ना मसल जैसा, उसको चेंज करना होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है. लेकिन सूची के पास दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है. उस तरह के जो बहुत ही क्रिटिकल मरीज होते हैं, बचने की संभावना कम, उस परिस्थिति में वो मदद करते हैं. The next footprint is on environmental protection, and we got to educate from very young about why we need to take care of the earth. This is about the virtue of benefiting not ourselves, but benefiting others and the world at large, so that
we do not greedily consume the natural resources that we have today at the expense of the future generation. तो और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है पर्यावरण सुरक्षा। तो बच्चों को जानकारी दी जाती है कैसे हम अपने पर्यावरण को साफ सुंदर व्यवस्थित और स्वच्छ रखें, क्योंकि विश्व में ये एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है। और अगर पर्यावरण दूषित होगा, जाहिर सी बात है बीमारी होगी, सफरिंग बढ़ेगी। तो इस पे भी एजुकेशन जो है इस पे फोकस किया जाता है, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण के बारे में बच्चों को विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। The last footprint, we have the community volunteerism. So what we do is that in every where Suchi is, like for example in Malaysia, we have many we have quite a number of communities within our own state. This is for us to gather together to be able to help one another in our cultivation and also doing work together to promote the virtues together so that we can help those who to each other to understand better. कम्युनिटी वॉलंटियरिज्म में लोग आपस में जो वॉलंटियर है ना, ग्रुप बनाकर जाते हैं अलग अलग जगहों सोसाइटी में और बहुत तरह के कार्य करते हैं, ट्रेनिंग से लेकर जहाँ जहाँ जो जो आवश्यकता होती है। तो इसमें वर्च्यू को भी प्राथमिकता दी जाती है, अपने अंदर डेवलपमेंट के साथ में दूसरों को भी उसमें प्रगति हो, आगे बढ़े, उससे संबंधित हो। So, in the process of all this, we also educate the rich to help the poor. तो इसमें जो गरीब लोग हैं उनको भी मदद पहुंचाना एक प्राथमिक उद्देश्य है। But it's very important to note that every cent which is donated to Searchy must reach the recipient. Okay, so next I'll quickly go through the mission of charity and disaster relief. To teach the rich to help the poor. So this is to really also we help them see. Being poor doesn't mean one cannot cultivate. So they need to realize they have the spiritual wealth within themselves. तो यहाँ पे जो अमीर लोग हैं उनको भी मोरालिटी के बारे में, वर्च्यू के बारे में बताना, ताकि वो समाज को अच्छा बनाने का कार्य कर सके, गरीबों की मदद कर सके। ऐसा नहीं है कि जो गरीब है वो आगे नहीं बढ़ सकते, वो भी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा जो मन है वो भी कल्टीवेट कर सकते हैं ना, कुशल मन, उस पर भी फोकस। You see all this in blue uniform, which you see what I'm wearing right now. Those are all the Searchy volunteers. Our motto is to be the first to arrive and the last to leave. So Searchy volunteer का motto है कि सबसे पहले हम आएंगे, सबसे अंत में। So let me now next go into the medical mission. So we infuse science is the medical science with humanity, trying to attend to the illnesses of the poor, healing people, and at the same time, we want to heal their minds as well. यहाँ चिकित्सा से संबंधित जो सेवा है उसमें देखें जो गरीब लोग की मदद की जाती है और जो व्यक्ति है उसका सिर्फ शरीर ही नहीं मन को भी हील करने का ट्रीट करने का प्रयास किया जाता है। Okay, so we have this now the bone marrow registry. We have about 400,000 registered. So far, there are 4,000 matches in 29 countries. So, in fact, in Searchy Bone Marrow Bank is quite well known with hospitals around the world. And when they can't find the right match, they do sometimes come to approach Searchy. वहाँ फोटो में आप देखिए जो छोटे से कपड़े में वो बोन मैरो का है। तो वर्ल्ड में करीब अभी 400,000 रजिस्टर हो चुके हैं बोन मैरो, जिसमें 4,000 मैच हुए हैं 29 देशों में। सो ये विश्व में एक लौता ऐसा संस्था है जिनके पास इतना बड़ा कलेक्शन है। तो जहाँ भी विश्व में लोगों को आवश्यकता होती है तो सूची से संपर्क करते हैं बोन मैरो। So Bob, we are terribly sorry that because Master, they actually have class right now. So I'm afraid that
we might have to end the sharing session today already. Okay. Okay, we end here. You want me to end here? Would that be possible? Can? Okay. You want me to end here? Yes. Yeah. Okay, we end here. Thank you, support. Thank you so much. Thank you for sharing today. Okay, so I now offer a bow to the Sangha members. Can we take a group photo, please? So we are going to take a group photo. Okay. Can we have just everyone to have a seat first, and then we take group photo, then we will end the session. Okay. Hi, Shibu. Yeah, your mic is mute. Can we just say hi? Hi. Okay. Okay. So we are going to take a group photo. Can we have some of you from the side to come to the middle? Let's come to the middle. Can we come to the middle a bit? Maybe some people come here, please. Or come to the front also can. Okay. Okay, and then over there also try to squeeze in a bit. Try to squeeze in a bit. Squeeze in a bit more. And then volunteers, please come. All right. Here also. Yeah, three of you here. Because we cannot. Let's see. Okay, Brother Silong, you may want to stand inside as well. To this side. Yeah. Yeah. That's quite empty, that side. Yeah. You stand over that side. Yeah. Okay. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, that's all. 感恩大家。感恩 Brother Chin, 感恩 to all the monastic Sangha, 感恩。Alright, so 感恩大家。 so we can dismiss already. And then Brother Raymond. Okay, done already. I'll send the recording to you all later, yeah? Okay, 好的，拜拜。感恩。感恩 Brother Chin。 Okay, thank you so much again.